A levels as well. So I'm going to write down a bunch of equations. There's number one, that's metal plus acid it produces. It produces salt plus hydrogen gas. That's the first equation. You should know how to make this equation. Number two. Number two is if you have a metal oxide or a metal hydroxide, anyways, they react with acids to produce salt and water. Okay, so you obviously know this as well. इसको थोड़ा सा- so metal oxide or a metal hydroxide, that's what it would do. These are known as bases. But there's another base which is carbonate. Carbonates also react with acids to produce salt, water, and carbon dioxide. So that's your reaction with carbonates. Uh, number four, number four is that you have ammonia reacting with acids, and they are going to produce ammonium salts. Ammonium salts. ये एक एक करके ना हम सारी practice करेंगे, ठीक है? We're going to be very quick with this, but you have to have a very quick refresher course on how to make equations very, very quickly. Number five, ammonium salt, they react with bases to produce salt, water, and NH3. I said number six, what other equation that you did in O levels? Number six is there's a thing called ionic precipitation. We're going to discuss how to make that equation, also known as a double displacement reaction. Number seven. Number seven is a metal reacts with the water and produces metal hydroxide plus gives off hydrogen gas or metal oxide. Then you have number eight, which is decomposition. A carbonate, a metal carbonate, it decomposes to produce metal oxide plus carbon dioxide gas is given off. Now, in your course, you just have group 2 carbonates. You have group 2 carbonates only. Achha, then you have nitrates. For nitrates, it's a metal nitrate. It decomposes to form metal oxide and gives off NO2 and O2 gas. ठीक है और I'm not going to talk about other metal nitrates because they're not in your course. Group 1 के nitrates नहीं है course में.
So we're going to only stick with group 2 metal nitrates. बाकी कोर्स में नहीं है. ट्रांजिशन मेटल्स आएंगे वो अगले साल आएंगे in A2. Now number 10, another decomposition equations. इनके साथ हम लिख लेते हैं plus heat, just to indicate that they are that they are decomposition reactions. Anyways, number 10, a metal hydroxide, if you heat it, it also decomposes and it ends up forming a metal oxide. And a water molecule. Okay. So, anyways, that's organic or Takana. That's a lot of equations. Okay. Now, all of these equations, they must be on your fingertips. Okay, we're going to study. You're probably familiar with most of them. Haya naam इधर लिख दो कि so you are probably familiar with most of them. Just wait 1 second. अच्छा लेकिन थोड़ा सा हम इन equations के बारे में we're going to go in a slightly more a little more bit more detail. Just give me 1 second. Hold on 1 second. अच्छा about these equations. मैं थोड़ा सा background पहले दूंगा कि to make these equations you need to know what are acids, what are bases, some very basic things. So very quickly, charges तो पता ही है, ठीक है? It's group 1, group 2 and group 3 and so on. ठीक है? You have group 4, 5, 6 and 7. This is -1, this will be -2 and so on. -3, +3, +2 and this is +1. ठीक है? Hopefully you already know this. ठीक है? Then there are polyatomic ions. So how are ions formed? Now I'm going to slightly go into a bit more detail because remember this is A levels chemistry, so it's not all O levels. Polyatomic ions. अच्छा पहले तो लिस्ट कर लेते हैं polyatomic ions. How are ions formed? Group 1, 2, 3 they lose electrons. Group 4, 5, 6, 7 they gain electrons. ठीक है, you pretty much know why this happens. Polyatomic ions. Polyatomic ions are molecules that end up gaining or losing electrons. Now, how do they do that? For example, and you might be asked in A levels, you might be asked to draw some polyatomic ions. So, for example, you have oxygen. Now, oxygen, if it bonds with water, it's going to form a covalent bond, right? It has a total of, as I'm going to draw a few of the polyatomic ions. Now, oxygen forms covalent bond. Usually, क्या होता है कि there is hydrogen over here. Hydrogen has 1 electron. Now, non-metals, they don't like to lose electrons. So if oxygen needs 2 electrons, तो वो हाइड्रोजन को पकड़ेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को ला के अपने साथ रख लेगा. ठीक है? So that's a covalent bond. मतलब it tries to attract hydrogen's electron, लेकिन hydrogen is not giving up its electron, so पूरा का पूरा हाइड्रोजन का एटम उसके साथ आ जाता है. So that's sharing of electrons. अच्छा, there might be another hydrogen over here. So if you have another hydrogen over here, and that would result in the formation of oxygen को 2 electrons मिल गए. ठीक है? So that's simply a water molecule. But what happens in a polyatomic ion? In a polyatomic ion, maybe there's no other hydrogen, but oxygen still needs 1 electron. Its outer shell is not complete. Non-metals always have more protons, which is why, I mean, non-metals, मतलब जो pure table का right side होता है, they have more protons.
which is why they're always trying to gain electrons. दूसरे atoms के electrons को ना वो पकड़ पकड़ के अपने साथ attach करते हैं. They're always trying to gain electrons. Why? But if I open a periodic table in front of you, then over here you can see that lithium only has 3 protons. But if you move to the right, well, lithium has 3 protons, but if you move to the right, then what's happening? Fluorine has 9 protons. So 9 protons obviously electrons को ज़्यादा strongly attract करते हैं. So as you move to the right of the periodic table, the tendency actually changes to gain. I mean, substances they start gaining electrons. Why? Because they have more. Because they have more protons. So इसलिए ना oxygen would try to gain electrons. But what if we have a lithium atom? अब इस side पे hydrogen now. What if we have a lithium atom? Lithium has 3 electrons. So lithium has a total of 3 electrons. Now, in the case of lithium, oxygen अगर इससे electrons मांगेगा ना, oxygen needs 1 electron. But if you have a metal on the other side, metals are notoriously good at losing electrons. तो metal खुद अपना electron देने नहीं आएगा. It's just going to throw its electron to it. Because lithium has just 3 protons. तो ये electron जाके उठ के वहां चला जाएगा. Lithium will get a +1 charge. And this ends up forming, this is your OH minus 1 ion. Okay, so how are polyatomic ions formed? Okay, there's a covalent molecule that ends up gaining or losing electrons to form this negative ion. तो एक electron जो ये green वाला है ना, ये उसने बाय से gain किया, which is why. So this is basically your lithium +1 and OH minus 1. ठीक है कि half of the things were done using covalent bonding. I mean, this bond over here, it was short of electrons. It ended up gaining electrons, ended up forming a -1 ion. Okay, is this clear? Right? Yes or no in the chat. अच्छा फिर इसी तरह I'll do one more which is carbonate. ठीक है, I'll do carbonate and sulfate as well, because you might be asked to draw dot and cross diagrams of these. नहीं, we're doing equations right now. ठीक है, सिर्फ equations, basic equations. उसके अंदर ना वो acid basis salts का ना पुराना जो O levels का है ना, वो हम थोड़ा सा रिवाइज करें. अभी बिल्कुल बेसिक, वी आर स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी बेसिक. ठीक है, जो पुराने हैं उससे लिंक करें. थोड़ी सी मैं डिटेल ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि यू माइट बी आस्क्ड अबाउट इट. तो वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स थोड़ा सा बीच में मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन मेनली इक्वेशंस कर रहे हैं. अच्छा खैर, दिस वन कार्बोनेट्स. नाउ कार्बोनेट्स में कि व्हाट्स अ कार्बोनेट? कार्बोनेट इज CO3 minus 2. So I'm just not going to tell you that this is carbonate. I'm going to give you the dot and cross diagram. Now you have carbon. So carbon जो है ना, it has 4 electrons in its outer shell, right? In its valence shell. It needs 4 electrons. तो वो क्या करते हैं? एक ऑक्सीजन पहले पकड़ता है. ठीक है, so let's say there's an oxygen somewhere. ठीक है, so here's your oxygen. Oxygen has these electrons, 6 electrons in its outer shell. Carbon needs how many electrons? It needs a total of 4 electrons. तो ऑक्सीजन को पकड़ता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले आता है. ठीक है, so that's a covalent bond formed over here. ऑक्सीजन को भी 2 electrons चाहिए थे, so that's a double bond formed over there. अच्छा, carbon gets its 2 electrons. Let's say there are 2 more oxygens. CO3 है ना, so here's 2 more oxygens. अच्छा, carbon brings in 1 electron and attracts 1 electron, so there's a single bond formed over here. And then there's another oxygen over here. तो उस ऑक्सीजन का भी वही इशू है. It has 6 electrons.
तो कार्बन pulls its one electron and अच्छा तो कार्बन को अब देखो बीच वाले कार्बन को it's gotten its 4 electrons. Carbon is done now. It has gotten its 8 electrons. ठीक है, that's done. ये वाला ऑक्सीजन भी इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं. ठीक है, that's also fine. I mean it had 1 2 3 4 5 6 दो इलेक्ट्रॉन उसको कार्बन से मिल गए. ठीक है, so it's उसका outer shell is complete. The problem now is with these carbon with these oxygens. Look at these oxygens, their outer shell is not complete. 1 2 3 4 5 6 and 7. This oxygen needs 1 electron. Same as this one. This oxygen needs one more electron, right? अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन से भी आ सकता है, तो वो H2CO3 का मॉलिक्यूल बन जाएगा. So that electron, that extra electron can be gained from outside. Let's say there's a lithium atom over here. The lithium is in group 1. तो वो अपना इलेक्ट्रॉन आयोनिकली उसको दे देगा. So what charge would this get in? It will get a -1 charge because it ended up gaining 1 electron from outside, and lithium gets a +1 charge. And let's say there's another lithium over here. And there's another lithium over here that also has 3 electrons. वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ना उठा के it gives it to this oxygen over here. So this oxygen gets a -1 charge. And at the end of the day, this is your carbonate ion. It's CO3 2 minus. Because this oxygen has a -1 charge. There's 1 electron being gained from outside by both these oxygens ionically. So that's the science behind polyatomic ions. You have a perfectly covalent molecule, but somewhere down the line, its outer electrons are not complete. तो वो इधर से ना lithium atoms या कोई भी metal उठाता है उससे electrons, it starts gaining those electrons and ends up forming this polyatomic ion. So I'm just giving you examples so that you should be prepared that you might be asked to draw these polyatomic ions. ठीक है? Is this clear? Carbonate ion clear है कि how is a carbonate ion formed? Yes or no? So ठीक है, I'm basically not going into dot and cross diagrams. बस polyatomic ion के पीछे थोड़ी सी science बतानी थी कि how is a polyatomic ion formed. And we can list जो ज़्यादा important है ना, ज़्यादा important. That's बस मुझे थोड़ा सा excuse करना कि my throat is very bad. ठीक है, I can't really talk very loudly. अच्छा एक second, just let me check. अच्छा, this one. Polyatomic ions की list. That has to be, and most of you have already memorized this. उनकी कहानी मैंने बता दी है कि क्या थी, कि how did they form, the molecule ended up gaining or losing electrons. So OH-1 is a hydroxide. नाम मैं साथ साथ लिखता रहता हूँ. SO4-2 is a sulfate. Then you have nitrate, which is NO3-1. You have carbonate. कौन सा मिस हो गया? Phosphate. Then you have HCO3-1, hydrogen carbonate, ammonium NH4+1. ठीक है. इस साइड पे भी you have sulfites, nitrites, NO2 1-, phosphite, PO3 3-. Then you have hydrogen sulfate, dichromate 6, magnate 7,
ठीक है. A lot of them are very probably very familiar to you. CN-1 भी कर लो. uh, बाकी खैर इतने important नहीं है. I'll write the names quickly. ठीक है, just give me 1 minute. It's अच्छा, they should be memorized. This is sulfide. अच्छा, phosphide. Magnate 7. This is a cyanide ion. Ammonium. This is hydrogen carbonate, or also known as bicarbonate, phosphate, or carbonate. अच्छा, ये तो सारा रटा लगाना है, ठीक है. ये तो किसी भी टाइम आप भूल नहीं सकते. कहीं भी क्वेश्चन में आ गया ना कि व्हाट्स डाइक्रोमेट 6, यू मस्ट नो व्हाट इट इज. अच्छा, मूविंग ऑन. अब ये तो आयंस के नाम वगैरह. मूविंग ऑन, थोड़ा सा ओ लेवल्स का रिकैप. व्हाट्स एन एसिड एंड व्हाट्स अ बेस. क्योंकि जो ऊपर हमने ढेर सारे रिएक्शंस लिखे हैं ना, द वंस दैट वी रोट डाउन ओवर हियर, वी नीड सम साइंस बिहाइंड देम. बिकॉज मतलब आपको ए लेवल्स के अंदर ना, you'll not just be asked about the reactions. Simple straightforward questions नहीं होगा. थोड़ा सा पीछे ना, you must know what the background is for each reaction. Now most of these reactions are related to acids and bases. So the first thing is what's an acid and what's a base. ये मुझे कोई definition लिख दे उसमें chat में. What's an acid. ठीक है, ions in aqueous solutions. ठीक है, और base क्या होता है. ठीक है, अब मैं just so ये acid लिखा, ये क्या acid is. It produces H plus one ions. Base is that it dissociates to produce OH ions. ठीक है, ये लिखा हुआ है. अच्छा, now make sure, first thing, you have to be very careful with the definition now. O levels में वो definitions चल जाती थी. The correct definition is, अच्छा, there are actually three definitions of acids and bases. Your definition is the Bronsted-Lowry acid-base theory. So that's your definition of what an acid is and what a base is. Okay, acid is proton donor, that's it. मतलब H plus one, वो इसका मतलब वो H plus one देता है दूसरों को, ठीक है. So it's a proton donor. What's a base? Base is proton. अच्छा, although ये बीच में छोटा सा सेक्शन है आगे जाके इक्विलिब्रियम में, आई एम जस्ट गोइंग टू टीच यू दिस ओवर हियर, क्योंकि उसका इक्वेशन से ताल्लुक है, तो इट्स बेटर टू स्टडी इट ओवर हियर. अच्छा, सो दिस इज योर Bronsted-Lowry acid base theory. दैट इज इट. इस डेफिनेशन से आगे इसमें चेंजेस नहीं करनी. OH आयंस का कोई ताल्लुक नहीं है. ना कोई aqueous state है. It's the only definition is, remember acids and bases are multiple definitions. एक डेफिनेशन होती है Arrhenius. Arrhenius में होता है कि acid is H plus one donor, base is OH ion donor. One is your उसे कहते हैं Lewis acid based definition. That is, acid is a lone pair acceptor
एंड बेस इज लोन पेयर डोनर. वो सारी हम छोड़े, बस ये डेफिनेशन है. ठीक है, दैट्स इट. सो इट डजंट रियली मैटर कि अच्छा, एक इसमें ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. पहले तो मैं फिर से क्लेरिफाई कर दूं. दिस इज द डेफिनेशन, दैट्स इट. सो इफ एनी सब्सटेंस व्हाटसोएवर, अगर वो H plus O9 किसी को देता है, that's an asset. By definition, that's an asset. By this definition, it's an asset. And if any substance वो किसी से ना H plus 1 accept करता है, if it accepts H plus 1 so that is going to be classified as a base. No matter what, जो मर्जी चीज है, ठीक है? We don't care. That's a base. That's it. ठीक है? For example, you have a reaction. There's H2SO4 reacting with HNO3. It ends up producing HSO4 minus 1. अच्छा, let's say you have this reaction. कोई मुझे बताए कि यहाँ पे ना there's H2SO4 and यहाँ पे there's HSO4 minus 1. What happened over here in this reaction? This molecule, did it lose H plus 1 or gain H plus 1? एक H उसका कम हो गया. इसका मतलब है it has lost H plus 1. Right? क्योंकि पहले H ज़्यादा थे and now there's less H. If it has lost H plus 1, this is behaving as an acid. Is this clear? Right? Yes or no? Is this clear? अच्छा. So we don't care कि whatever the molecule is. अच्छा, दूसरे molecule को जरा देखो. You have a nitric acid molecule. लेकिन what's happening to it? If you look carefully, पहले उसके पास there was just one H. Now there's two H's. इसका मतलब है it has gained H plus 1 ions. अच्छा, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये एक सेकेंड. Mic asked to unmute. वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से? जस्ट वन सेकेंड. हेलो, आवाज आ रही है? वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछ लो मेरे से आप. अच्छा सर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? जस्ट वन सेकेंड. What I'm saying is कि this definition of an acid and a base, ठीक है? I'm just going over it again. कि कोई भी मॉलिक्यूल है, दुनिया में कोई भी मॉलिक्यूल है, वो भूल जाओ कि ओ लेवल्स में क्या पढ़ा था कि या एसिड क्या है और बेस क्या है, ठीक है? अच्छा, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पिक एनी मॉलिक्यूल एंड लुक एट दिस इक्वेशन ओवर हियर जो मैंने लिखी हुई है, ठीक है? इसमें इस मॉलिक्यूल को देखो कि अभी इसके पास कितने एच है. लुक ओवर हियर, इट हैज एग्जैक्टली वन हाइड्रोजन. उधर जाके कितने एच हो गए उसके पास? अब दो हो गए. तो इसका क्या मतलब है? इट हैज गेन एच प्लस वन आयंस. गेन का मतलब एक्सेप्ट करना है ना. इट हैज एक्सेप्टेड एन एच प्लस वन आयन. तो दिस, in this equation, according to the definition, this is acting as a base. It is acting as a Bronsted-Lowry base. ये बात समझ आइए कि बेस की डेफिनेशन क्या थी? कि any molecule if it gains H plus 1 ions. ठीक है? तो I mean there are tons of reactions happening. जो मर्जी रिएक्शन है, I'll give you just जैसा ये मैंने एक रैंडम रिएक्शन लिखा है. It could be a completely random reaction. पुराना जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है ना, you have to get rid of that.
Look at an equation, any random equation. If someone in an equation gains h plus 1, तो उसका मतलब है उसका मतलब है uh, it is a base. If someone in the equation loses or lost an h plus 1, उसका मतलब है it is acting as an acid. ठीक है, so that's the definition of Braunsted-Lowry. This is the definition that we're going to work with. तो पुरानी definition थोड़ा सा भूल जाओ. उसमें I'll add a few more things. Let's pick another equation. I have NH4 plus 1 reacting with OH minus 1, and it's producing NH3 and a water molecule. Okay? Now I'm going to apply this definition everywhere. Now, is this an acid-base reaction or not? अच्छा ये देखो इसके पास कितने H है? It has 4 H's. यहाँ पे देखो it has lost an H plus 1. So it has lost H plus 1 ions. Now that means, according to the definition, if anything that donates or loses H plus 1 ion, it's an acid. तो इसका मतलब है in this equation, this ion is acting as an acid. अच्छा इसको देखो OH minus 1 को, वो यहाँ पे OH minus 1 था, on the other side it went and formed H2O. So based, well, it had only one H, now it has two H's. So that means it is gaining H plus 1. So anything that gains H plus 1, that's your base, that's your Braunsted-Lowry base. तो अपना पुराना एसिड बेस का ना कॉन्सेप्ट सारा निकाल दो. आई मीन ऑल द पुराना वाला भी ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, बट नाउ योर कॉन्सेप्ट इज मच बिगर, इट्स मच ब्रॉडर. ठीक है, it could be any equation you can apply this concept. ठीक है, you can figure out which one is an acid and which one is a base. ठीक है, is this clear? Yes or no? ये दोनों examples clear है? बाकी भी सर ठीक है. हिबा रिदा, is this clear? अच्छा, now I'm going to talk about this concept a bit more. अच्छा, remember कि this is a much broader concept than what you studied in O levels. ठीक है, it's a much broader concept. मतलब ये concept, ये जो दोनों definitions है ना, ये आप किसी चीज के ऊपर भी apply कर सकते हो. ठीक है, so वो जो reactions पढ़े थे ना उसमें O levels में, so now your reactions, acid base reactions are unlimited. This is an acid base reaction, this is behaving as an acid, this is behaving as a base. जबकि O levels में पढ़ा था कि ये nitric acid है. But in this reaction, it's behaving as according to the definition, it's behaving as a base. ये reaction भी उसी तरह है. You studied this reaction. इस reaction के अंदर, by definition, this is your acid and this is your base. So the definition is a lot broader now. अच्छा, anyways, main point पे आते हैं कि ये H+1 इतना important क्यों है? मतलब why are we wasting so much time? मतलब why are we wasting, हमने O levels में आधा काम ही यही किया था, acid base पढ़ रहे थे बैठे. ठीक है, so why are we wasting so much time on this H plus 1? But why is it so special? If somebody is losing H plus 1, somebody is gaining H plus 1. Why is, मतलब कोई और आयन क्यों नहीं? मतलब why are we stuck with H plus 1? तो पहले तो तुक्के लगाओ ना कि why is, any guesses, कोई भी random guess, just type. मतलब ये pH वगैरह ये सारा हम क्यों पढ़ रहे होते हैं? Why is the whole concept of an acid and a base, and that whole concept revolves around this H plus 1? What's so special about it? किसी को कोई idea? Yes or no? नहीं, स्टोइशियोमेट्री तो चलो इक्वेशंस बनाने को कहते हैं, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है. मैं तो वो कह रहा हूँ कि acid by definition is someone that loses H plus 1. Base is a guy that gains H plus 1.
आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाई इज H+1 सो स्पेशल, ठीक है? तो उसका भी थोड़ा सा मैं एसिड और बेस का बैकग्राउंड दे दूं कि व्हाई इज इट सो स्पेशल. अच्छा, रीजन आई मीन H+1 इज द मोस्ट स्पेशल थिंग. ये दुनिया के अंदर ना प्लैनेट अर्थ के ऊपर, प्लैनेट अर्थ के ऊपर ना दिस इज वेरी स्पेशल कि not on other planets and not probably not in other parts of the universe as well. The reason H+1 is important is कि chemistry of planet Earth, ठीक है, ये Earth की जो chemistry है, you can call it the chemistry of life, ठीक है, it's revolving around water. Now water is everywhere. 70% of the Earth's crust is water. हमारी पूरी जो human body है ना, that's water is everywhere. It's a part of every cell. It's in your blood. It's everywhere. ठीक है? Plants वगैरह, they all survive on water. तो chemistry के अंदर ना water is that's your primary solvent. That's your main solvent on the surface of the earth. Water जो होता है ना वो ionize करता है slightly, very weakly. ठीक है? It ionizes very weakly and it produces these two ions. अब because water is everywhere, ठीक है, ब्लड के अंदर भी वाटर है, स्टमक के अंदर भी वाटर है, प्लांट्स के अंदर भी वाटर है, ठीक है, मतलब ओवरऑल इवन एटमोस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स है, सो वाटर इज एवरीवेयर एंड वाटर इज योर मेन सॉल्वेंट. अब व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर. नाउ वाटर इज योर सोल्यूशन. जब भी आप सोल्यूशन कोई बोलता है ना, तो 99.99% of the times basically you're talking about water. हार्डली कभी कोई सोल्यूशन ना किसी और सॉल्वेंट का होता है, ठीक है, वेरी दैट्स वेरी रेयर. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट वाटर, ठीक है, मतलब और भी सॉल्वेंट्स हैं लेकिन अर्थ की क्रस्ट पे वाटर इज अबंडेंट. अच्छा, एनीवेज, if a water molecule dissociates, breaks down, let's say you have a bucket of water, it has billions of molecules of water. उनमें से थोड़े से molecules आप break down करते हैं, H+1 और OH ions बनाते हैं, and they're going to be produced in equal quantity. जितने H+1 बनेंगे उतने ही exactly OH ions बनेंगे. This is called neutral water, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर pH 7. कि पानी के अंदर ना जो भी सोल्यूशन है ना उसके अंदर H+1 और OH आयंस ना बराबर है. प्लांट्स जो है ना दे प्रेफर pH 7. क्यों? क्योंकि दे लाइक H+1 and OH ions, they should be in equal quantity. अच्छा, but then there are reactions are happening on the earth's crust. They don't like this, they don't like this. What they like is, for example, stomach है आपका, वो प्रेफर करता है acidic conditions. अब acidic conditions में क्या होता है कि there's a lot more H+1 ions. मतलब है सोल्यूशन ही वाटर है लेकिन now how can you have more H+1 ions? The only possible way you can have more H+1 ion is if you add an acid. But there must be a molecule in the solution that is constantly producing H+1 ions, जिसकी वजह से H+1 की quantity जो है that's much greater compared to OH ions. So that's your acidic solution. That is your pH less than 7. और मैंने उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा H+1 ज़्यादा होते जाएंगे तो एसिड क्या होता था? प्रोटॉन डोनर होता था. इट वुड इंक्रीज H+1. और सिमिलरली एक तीसरे टाइप का सोल्यूशन होता है व्हिच इज योर बेसिक सोल्यूशन. तो बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है? H+1 कम हो जाते हैं. I mean, your saliva to an extent is basic. तो और बेसिक क्यों होता है? क्योंकि बेस हैज बीन एडेड. I mean, there must be a molecule in there that is constantly accepting H+1, that is removing H+1. तो आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर H+1 की क्वांटिटी जो है वो, अच्छा, उसके अंदर H+1 की क्वांटिटी जो है ना वो कम हो गई है. अच्छा, now why this whole thing is important? I mean, this is basic. And pH is greater than 7.
So this is where the definition of acid and bases is important, and this is why acids and bases are important. क्योंकि हर जगह मैटर करेगा. क्योंकि every reaction that's happening, for example, the human body, आपके cells के अंदर ना solution है. It has water in it. So is this type of water, or is it this type of water, or is it this type of water? वो reactions को affect करेगा. Some reactions they would prefer neutral conditions. Some reactions would need more H plus ions. So there must be a molecule in there that is producing H plus ions. And there might be some solutions, some places where basic conditions are preferred. They कि saliva के अंदर ना sugars dissolve होती हैं, and they probably prefer कि ज़्यादा OH ions हो. So the 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 ये जो water की composition है ना, कि whether it has equal quantities of H plus one and OH ions, whether it has more H plus one, or whether it has less H plus one, that affects all the reactions on the Earth's crust. क्योंकि water is everywhere. Blood के अंदर जो भी blood slightly acidic होता है, ठीक है, वो इसलिए होता है कि अच्छा blood क्यों slightly acidic होता है, क्योंकि blood के अंदर एक ये molecule होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो जिंक एमाइलेज वो एंजाइम होता है, उसके साथ प्रॉब्ली रिएक्ट करके ends up forming HCO3 - and it produces H plus one ions. तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, when it dissolves in water it produces this. तो आपका जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर H plus one ions की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, because carbon dioxide does exactly that. It produces H plus one ions. ठीक है, तो इसलिए ना ये H plus one बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर इज एवरीवेयर. एंड तो हमने दो चीजें मैं बस सम अप कर दूं. एक तो वो पढ़ लिया कि H plus one इंपॉर्टेंट क्यों है. सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर ना रिएक्शन जब आप कर रहे होते हो ना, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू चेक इज द पीएच. क्योंकि रिएक्शन पानी के अंदर होना है, पानी की जो कॉम्पोजिशन होगी दैट्स गोइंग टू अफेक्ट द होल रिएक्शन. स्टमक का पीएच जरा सा भी चेंज हो गया ना, स्टमक के रिएक्शंस होना बंद हो जाएंगे. ठीक है, सो व्हिच इज व्हाई पीएच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, एंड दिस इज व्हाई एसिड्स एंड बेसिस आर इंपॉर्टेंट. और हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली है कि व्हाट्स एन एसिड, व्हाट्स अ बेस, एंड इन ए लेवल्स यू आर गोइंग टू स्टिक विद दिस डेफिनेशन. दैट्स इट. ओ लेवल्स वाली डेफिनेशन भूल जाओ. एंड दिस इज अ मच ब्रॉडर डेफिनेशन, सो स्टिक टू इट. और ये किसी भी रिएक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, इवन इफ इट्स according to O levels, this is two acids reacting, but one of them is acting as an acid, the other one is acting as a base. Are there any questions about this? ये clear है? चलिए ठीक है, we'll continue with this. सबसे पहले ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये भी AS की हमने थोड़ी थोड़ी बिट्स जो इक्वेशंस के साथ है, we'll do that. We'll quickly try and cover the equations and make equations, जो कि आप ज़्यादातर खुद ही होमवर्क में ही करोगे. लेकिन ये हम जल्दी से करेंगे. ठीक है, and we'll then start covering more. चलिए, okay then, take care. If you still have questions, you can send those questions on WhatsApp. Okay, Allah Hafiz.